Okay, so I welcome all of you once again. It's a nice session here today. It's about 22 laws of marketing. They are not, however, only applicable to marketing. They are applicable to general principles of life. So a lot of laws may be applicable to the all of business, or let's say commerce, or all the basically the entire flow of business, its whole journey. Okay. And some of the laws may also be applicable to other fields. It's from a beautiful little Bible kind of a book used for marketing. It compiles the laws. Let's get started. So it starts all with the quote. Basically, we are starting with a fantastic quote here. Sales cure all. Okay. So what is sales cure all? What is sales is the most important thing in any business. Without sales or customers, essentially sales से ही revenues आएगा. Basically, if you have, it's all linked, right? Basically, if you have customers, you'll have sales, or let's say buying customers, तो sales होगा, और sales है तो profits होगा, and profits है तो business या company survive करेगा. That means sales cure all. आप एजेंडा बनाते हैं, मार्केटिंग कैंपेन बनाते हैं, प्लान करते हैं, and but if there are no sales, right, it all goes down. But if you have sales, then you perhaps not even present your experiment. आपको उसको रिपोर्ट कार्ड डैशबोर्ड ज्यादा ये करने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज यू हैव सेल्स. सो सेल्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. लेट्स गेट started with the laws. We are entering into the laws. There are 22 immutable laws, as they say. तो immutable का क्या मतलब होता है? Immutable का मतलब होता है जो चेंज नहीं कर सकते हम. जैसे इस टेक्नोलॉजी में हम काम करते हैं, सो एज कोडर्स और एज वी राइट कोड, we create immutable variables और mutable variables. So mutable variables मतलब जिनकी वैल्यू चेंज कर होती है, और immutable मतलब जो एक बार बना दिया तो चेंज नहीं होता. So they have been called immutable laws of marketing. That means they will apply irrespective of other things. There could be specific things that we will see, but in general the laws will stack. So break them at your own risk, kind of a thing. Okay, we'll see generally what they represent. So there is a first beautiful law here. It's called the law of leadership. So basically, the law of leadership states that it is better to be first than it is to be better. मार्केट में कोई तो एक लीडर होता है ना? हर एक डोमेन में कोई तो लीडर होता है. स्पोर्ट्स केस में भी आप देखेंगे, म्यूजिक केस में भी देखेंगे, लता मंगेशकर को हम ये करते हैं, हम जो टॉप लीडर्स हैं इंडस्ट्रीज के, हम उनको जानते हैं बाय नेम्स, राइट? तो लॉ ऑफ लीडरशिप बिजनेस में भी स्टैंड करता है. हाउ डज इट वर्क? बेसिकली हुएवर गेट्स देयर फर्स्ट गेट्स टू sow the seed, gets to be the brand, gets to stand in the customer's minds. तो बेटर होने में टाइम लग जाता है, ठीक है? सो इट इज बेटर टू बी फर्स्ट देन इट इज टू बी बेटर. तो बेटर का मतलब हम लोग हमारे प्रोडक्ट को पॉलिश करते हैं, राइट? वी बिकम बेटर, वी ऐड मोर फीचर्स, we add more products to our portfolio, we add more customers. लेकिन ये सब बेटरमेंट के चक्कर में टाइम लगता है, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ प्रोसेस, एवरीथिंग हैज अ सिस्टम, यू हैव टू डू एक्सपेरिमेंट. बट हुएवर गेट्स देयर फर्स्ट गेट्स टू ईट द पाई, है ना? जो पहले आता है उसको ज्यादा कवरेज मिलता है, उसको ज्यादा मार्केटिंग मिलता है, एडवर्टीजमेंट मिलता है, नेचुरली कस्टमर्स को याद रहता है बना, है ना? तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस लॉ. इससे क्या पता चलता है कि आपको जल्दी से लॉन्च करना है कोई भी चीज. आपको बेसिकली यू हैव टू गेट देयर फर्स्ट, देन टू becoming a polished finished product, because it will take time. There is another next nice law here, which is the law of the category. So before we get into this, or some of the laws, let's say, are related to each other also. So let's not stop at each of this one. Maybe we can talk about a couple of them and then we can see how they relate. Okay.
तो लॉ ऑफ कैटेगरी में क्या होता है, इफ यू कांट बी द फर्स्ट इन अ कैटेगरी, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से हम बोलेंगे कि अरे 22 लॉज है तो ये सारे अप्लाई होने चाहिए क्या, समवन विल आस्क, राइट, और समवन विल से हाउ टू अप्लाई ऑल ऑफ देम, और समवन विल से आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ठीक है, so the answer is they are mutually exclusive also. You can even just apply a couple of them maybe, or let's say कुछ laws आपके business type को apply होंगे, not all of them maybe, ठीक है. So this second law says that if you can't be first in a category, basically set up a new category you can be first in. For example, है ना, कोई बिजनेस होता है, ठीक है, कोई लेट्स से बैंकिंग, फॉर एग्जांपल बैंकिंग इज अ गुड एग्जांपल. तो बैंकिंग में क्या होता था, बैंकिंग में इट वाज ऑल फिजिकल बैंकिंग अर्लियर. We all used to go to the banks to deposit money, to withdraw money, to line up for simple inquiries, है ना, to line up for simple form filling. And there was form filling, a lot of form filling, right? You have to carry your pens. If you don't have pen, तो बैंक में आपको पेन भी नहीं देंगे. But nowadays the banking has been shifted to smart banking. स्मार्ट बैंकिंग में हम देखते हैं कि मोबाइल पे होता है, इंस्टा बैंकिंग होता है, फोन बैंकिंग होता है, कई सारे फ्लेवर्स हैं. इट इज बेसिकली गेटिंग बेटर एंड बेटर. तो कोई बोलेगा कि बैंकिंग स्टार्ट करते हैं, तो अभी नाउ द करंट रेज इज कंप्लीट ऑनलाइन बैंकिंग, जिसमें कुछ भी है ही नहीं, मतलब फॉर इवन लेट्स से फॉर आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, दे स्टिल हैव ब्रांचेस, राइट. देयर इज एटलीस्ट so many physical ATMs present. There are so many physical branches there. In Pune itself, I don't know, for every area there would be a branch, let's say, for example. There would be hundreds of branches across the city itself. Abhi, in the third race, it has become completely online. Now there are global banks, जिनके कोई branches ही नहीं है. They have everything online. They have one portal, जिसके through they do everything. They do security checks also through that. Everything. No physical branches, everyone working online. And all the operations are online also. ठीक है. सो दिस इज द थर्ड वन. तो अब कोई बैंक बनाएगा तो दिस इज द थर्ड कैटेगरी फॉर एग्जांपल. तो ये तीनों कैटेगरी हमने देखा, फिजिकल बैंकिंग, स्मार्ट बैंकिंग, और लेट्स से मोबाइल बैंकिंग, और जिसमें सब आ गया, कॉल बैंकिंग, डेस्कटॉप, लैपटॉप, एंड देन थर्ड वन इज लेट्स से कंप्लीटली ऑनलाइन. सो whoever wants to open a bank now, he has to choose the fourth category now maybe. Okay, because see, this law states that there will always be competition in the first one. So you have to create a category. You have to carve out your niche maybe. थोड़ा सा यूएसपी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं. हमने यूएसपी प्रेजेंटेशन में देखा था. सम पीपल विल बी एबल टू रिलेट टू इट. यूनिवर्सल सेलिंग पॉइंट. हाउ आर यू डिफरेंट, और व्हाट इज योर कैटेगरी, वेयर इज योर मार्केट नीश, वेयर इज योर स्पेशलिटी. इट्स वेरी नाइस. इट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ द माइंड. ठीक है. तो ये क्या कहता है, ये कहता है इट्स बेटर टू बी फर्स्ट इन द माइंड देन टू बी फर्स्ट इन द मार्केट प्लेस. तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल पिक्चर भी हम देख रहे हैं, MITS Altair 8800 और एप्पल 2. तो किसी ने नाम सुना है इन दोनों में से? What do you think people have heard out of these two? अभी ये मिट्स एल्टेयर का किसने सुना है, मुझे बताओ नाम पहले. 8800 ये किसी ने सुना है पहले अभी तक? नहीं सुना ना. तो व्हाट इज द डिफरेंस, है ना. दे आर बोथ कंप्यूटर्स, दे आर बोथ फ्रॉम द सेम एज. तो जब स्टीव जॉब्स ने ये एप्पल 2 बनाया था, तब ये मिट्स एल्टेयर भी किसी और ने बनाया था, IBM ने बनाया था, और लेट्स से सम अदर कंपनी क्रिएटेड. बट इट डिडंट गेट एवर टू द माइंड्स. इसको भूल गए लोग, राइट. दे गॉट इरेडिकेटेड. सो एप्पल rules the market now, or let's say Microsoft also rules the market. So there are a couple of players, but ये मिट्स गायब हो गया. क्यों गायब हो गया? क्योंकि इसका नाम देखो ना कैसा है, मिट्स एल्टेयर. नाम बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, एंड इट डिडंट गेट देयर फर्स्ट इन द माइंड. एप्पल इज इजियर टू रिमेंबर. एप्पल हम खाते हैं रोज, राइट. तो एप्पल टुक द मार्केट शेयर. वो एक जो बाइट लिया है ना, दैट बाइट इज एवरीवन एल्स. एप्पल सेज उस 10%, 15, 20% में दे से एवरीवन इज देयर, माइक्रोसॉफ्ट एंड एवरीथिंग. बेसिकली वी रूल द वर्ल्ड. ठीक है. सो व्हाई इट रीच्ड देयर? बिकॉज दे गॉट देयर फर्स्ट इन द माइंड ऑफ पीपल. तो सेम प्रोडक्ट बन रहे थे उस समय पे भी, है ना.
Microsoft, Steve Jobs, this Bill Gates created is similar language and computer development around similar times. Similarly, a lot of other big companies at that time, like IBM and this thing, were creating their own similar machines to solve the current need. देखो प्रोडक्ट्स क्यों बनते हैं, कोई भी कंपनीज क्यों बनते हैं ना, दे सॉल्व करंट नीड, दे सॉल्व करंट बिजनेस problems, they solve current customer problems and create products to solve them. Similarly, these two machines were getting created, but why Apple got there? Because of the law of the mind. It got there in the mind first, it got there in the minds easily, it got there with a name easy to remember and to make it a part of our lives. Although they were similar functioning machines, or maybe even MITS was better, who knows? But then Apple, this is not the version we see today. So they got to continuously improve. Okay, let's see another beautiful law here. It's called the law of perception. Law of perception में क्या होता है? Perception हमको पता है, बहुत सारे लोग. Perception just general word का meaning क्या है, सबको पता है क्या? What is a perception? और perception versus truth? तो ओपिनियन इज करेक्ट एक्चुअली. तो ओपिनियन जो हम बनाते हैं किसी भी सिचुएशन को देख के जजमेंट बनाते हैं, परसीव करते हैं इन अ पर्टिकुलर वे द वर्ल्ड, है ना. जैसे समझो किसी का मूड खराब होता है और कोई और सिचुएशन होती है ऑफिस पे या विच पुल्स यू डाउन, तो वो और ज्यादा बुरा लगता है ना. लेकिन अगर मूड अच्छा है और कुछ छोटा मोटा आपके साथ ऐसा भी हो गया, कुछ चलो ये हो गया, भूल गए, कुछ हो गया, बट देन यू डोंट फील दैट बैड. So you perceive in a different way based on your mood that time. You perceive situations differently based on different scenarios and things. तो perception का मतलब हुआ ये truth नहीं होता. It is how you look at it from that angle. आप XYZ बन के देखोगे, आपका बॉस बन के देखोगे या फ्रेंड बन के देखोगे, जो अपोजिट साइड में है आपके, विपक्ष का जो है सामने खड़ा है, अपोजिशन जो है ना, एंटेगोनिस्ट जो है प्रोटेगनिस्ट के सामने, विलेन जो है, तो उसका परसेप्शन से देखेंगे तो हमें पता चलेगा. एनीवे, सो मार्केटिंग इज नॉट अ बैटल ऑफ प्रोडक्ट्स, इट्स अ बैटल ऑफ परसेप्शन. तो मार्केटिंग में भी क्या होता है, दिस लॉ टेल्स अस, जैसे मैंने बताया कि लॉज ऑल्दो दे आर रिटन फॉर मार्केटिंग, बट दे आर एप्लीकेबल टू लॉज ऑफ business sections and they are applicable to lots of life principles also. Marketing is not a battle of products, it's a battle of perceptions. Product इसीलिए हिट नहीं होते बिकॉज दे आर मे बी एसेंशियली फुलफिलिंग, ऑलवेज फुलफिलिंग अ प्रॉपर नीड, है ना. दे आर दे डोमिनेट देयर मार्क इन मोस्ट ऑफ द केसेस बिकॉज ऑफ परसेप्शंस. लोगों को लगता है ऐसा. सो व्हाट डज इट मीन, है ना. It's an illusion basically. There is no objective reality, there are no best products. All that exists in the world, in the world of marketing, are perceptions in the mind of the customer. तो कस्टमर क्या सोचता है वो इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, उसके ऊपर से प्रोडक्ट बिकता है. वो ट्रूथ क्या है, इट बेसिकली नोबडी केयर्स. एवरीथिंग एल्स इज एन इल्यूजन बिकॉज ट्रूथ इज रिलेटिव, रिलेटिव टू द माइंड. है ना. क्वालिटी अगर अच्छा है, कस्टमर को लगता है, तो ही वो वैसा परसेप्शन होता है. ऑल्दो वी विल सी सम एग्जांपल्स और मे बी विद अदर लॉज इट विल बिकम मोर क्लियर. इट्स लाइक एवरीबडी नो प्रिंसिपल. ठीक है, कि क्राउड में जनरली पसंद आता है तो सबको पसंद आएगा करके हम देखते हैं. इट्स अ जनरल टेस्ट. ओके, लेट्स गेट फर्दर एंड इट माइट बिकम मोर क्लियर. द लॉ ऑफ फोकस. लॉ ऑफ फोकस में क्या होता है, द मोस्ट पावरफुल concept in marketing is owning a word in the prospect's mind. This is very, very nice. They just create a word like overnight delivery and Flipkart assured, or you know, you burn your way into the mind of the customer by narrowing it down to a single word. So even let's say IBM owns computer word, Hershey's owns the bar, or let's say the chocolate this thing. Xerox has become the word for
on the photocopying machines. And basically Google has become the word for search, which everyone will be able to relate to. They have just brought it down to one word. So even these words are part of the dictionary now. So slow, let's take another example. Okay, so there is the ketchup market. So there are lots of ketchups. Okay. So Heinz launched their way by being slow. So they launched very thick sauces or ketchup, and slow is the word they own. Okay. There is lots of companies that create specific, for example, Excel sheet. Excel sheet is the word synonymous with the spreadsheet. And Microsoft Excel owns that word. So basically, if you try to steal someone else's word, you will have a hard time. Good luck, right? Because you are आप एक established root को उखाड़ रहे हैं. For example, let's say someone wants to own the word search now and wants to steal it from Google. You can understand how difficult it would be. They need to have 3 times the marketing budget of Google, basically. Let's say if Google is spending 1 rupees on their marketing, for example, just a number, you will have to spend 3 rupees in the first place. You may not be bigger than Google, okay, that is a different story, but you will have to spend 3 times the marketing budget of the market leader, whoever is in that domain. तो डोमेन का जो भी मार्केट लीडर है, स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस जो है 51%, more than 51%, or more than 60% or 70%, if only one person owns the market in anything, then you will have a hard time. Okay. Let's see further. There is the law of the exclusivity. Two companies cannot own the same word. ये भी सिमिलर हमने देखा, राइट? ये इससे रिलेटेड है, देखो, है ना? लॉ ऑफ फोकस में हमने एक सिंगल वर्ड का देखा. सिमिलरली द लॉ ऑफ एक्सक्लूसिविटी इज सिमिलर. Two companies cannot own the same word. So you have to be exclusive. You have to be, your word has to be sound something different. Law of the ladder. The strategy to use depends on which rung you occupy on the ladder. There are lots of customers for us, for everyone, or let's say कोई भी company start होता है, तो they have a whole TAM, basically targeted addressable market. They have a market defined. Based on the position they occupy, they have to move. Someone will start from somewhere, right? Some companies will start from good funding. Some companies will target a very niche market. Some companies will have a strong value proposition about the user experience design of them. Law of the ladder says that you don't have the same strategy working for all the markets or all companies. Your strategy will depend on where you are. Your strategy will depend on your resources. Your strategy will depend on which problem you want to solve in that same domain. For example, it's healing mein hi. Someone will want to link it to the tangible products also. And let's say someone will add, let's say, medicines also to healing. The healing bhi do, medicines bhi do. Or let's say some other modalities that we are combining, like housing healing bhi do, or basically combine different modalities of it. So don't get this thing. The key takeaway in this is your strategy will depend on where you are. This is an interesting one. The law of duality, this says that in the long run, every market becomes a two-horse race. तो कहीं से भी आप शुरू करते हैं, eventually you see the market is being evolve होता है. तो evolution में क्या होता है? Eventually there are top 3 or top 2 players at the end, let's say. It gets leaner and leaner on the top. It gets leaner and leaner with time. It gets, basically the pie chart becomes clearly visible into only 3 colors. The first is, let's say, the first position, let's say Coke and Pepsi, McDonald's and Burger King. We saw another photo earlier, right, on one of the slides.
So you will see two top market leaders, two top names that you remember, right? You know, basically Facebook and Twitter, right? Microsoft and Google. Let's say Bing and Google search, right? Or Instagram and Facebook maybe. So this you will see getting involved in all disciplines, or let's say all domains, the irrespective of other things. In the long run, it will evolve to a 2 hours race. This is the law of duality. There is another nice law here, which is the law of the opposite. Law of the opposite is just related to the previous one. Let's say top two, we saw there will always be two dominant leaders or three dominant leaders. But so if you're shooting for the second place, your strategy will be determined by the leader. तो लेट्स से कोक एंड पेप्सी के बीच में वॉर चलता है, हमने देखा। तो पेप्सी क्या करेगा? पेप्सी कोक के सारे स्टेप्स को फॉलो करेगा, है ना? कोक अगर लेट्स से at number 1 place or Pepsi is at number 2. So Pepsi will follow all the steps of Coke. They will follow all the marketing details. They will follow each and every strategy because they are shooting for the second place. They are there on the second place. They will always want to go on the first. They will always want to learn from the mistakes that Coke is doing. They will always want to exploit those things that Coke has missed out. तो कोक बोलेगा it's for everyone, तो पेप्सी बोलेगा we are for the youth. We will, you know. So your strategy, it's good and bad basically. Bad because your strategy is dependent on someone else. कोई और क्या कर रहा है उसके ऊपर आपको अपना बनाना पड़ेगा. So you are always following someone. This is, you can basically look at it as the problem or the bad thing in this. But good part is you can shoot for the first always. You can basically cover the gaps. You can find the missing spots, or the second player will find the missing spots and will try to go on the first. Law of division. This is very simple. ये काफी लोग relate करेंगे. इसमें it's very simple. It says that over time, जैसे मार्केट होता है अभी, जैसे इस एग्जांपल को हम लेते हैं, टीवीज का मार्केट था. वी सी द बेसिकली टेलीविजन इन द मिडल, और अभी राइट साइड पे जो है वो हम देखते हैं मोस्ट लोगों के घर पे, राइट? कर्व टीवीज एंड स्मार्ट टीवीज, राइट? एंड ऑन द लेफ्ट इज देयर, जो बीच में था इन दोनों के, कि ये जो बॉक्स टीवी था इससे हम लोग स्मार्ट वॉल माउंटेड एंड थिन टीवीज एंड फ्लैट टीवीज पे आ गए, और फ्लैट टीवीज से एलसीडी, एलईडी, एंड देन वी हैव concave and convex and smart and whole wall mounted TVs. So this law is very simple. This law says that a category will divide it into two or more categories over time. तो एक ट्री बन जाएगा. फोन्स में भी हम ये सेम चीज देखते हैं. देयर वाज वन फोन, पहले डायल फोन था या ये था, ऐसा नहीं था. एसटीडी बूथ, then we got into button phones, then we saw other phones, handheld things, big phones, right? And then we saw smartphones now, and then we have basically watches, smart watches, and then smart. So there are so many categories emerging in the same market. There are other categories also. For example, there is, you can think of the toothpaste, right? Now there is a toothpaste that we'll see some examples with other this thing laws, but just remember in this that a category will divide itself into multiple categories over time. New players will emerge who will cash on the new categories. The market will divide into two or more categories and keep dividing further. The beautiful law here, the law of perspective. Perception हमने देखा पहले, but this is perspective. Perspective में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये law क्या कह रहा है? Marketing effects take over an extended period of time. It's not just one jerk that you can look at. For example, someone ran a campaign on anything, on a particular type of, let's say, offer. ठीक है, तो एक कैंपेन रन किया और लेट्स से इट बिकेम एन ओवरनाइट सक्सेस, और उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया. बट देन यू स्टार्ट कंक्लूडिंग all your plans on top of that, but that is not true. So what it says is that marketing effects will
happen over a period of time, over a long period of time. You will have to observe it for a long time. आपको ज्यादा समय के लिए देखना पड़ेगा, आपको ज्यादा कैंपेन्स चलाने पड़ेंगे, आपको लॉ ऑफ एवरेजेस भी अप्लाई करना पड़ेगा. तो पर्सपेक्टिव में भी थोड़ा सा आपको इसी ये परसेप्शन से कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट जस्ट रिमेंबर मार्केटिंग इफेक्ट्स विल बी सीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. है ना, एक हफ्ते में मार्केटिंग किया और बेस्ट सेलर हो गया, और 2 हफ्ते के बाद फिर से एक हफ्ता मार्केटिंग किया एंड इट मे बी जस्ट अ फ्लॉप कंप्लीटली. It may so happen because it depends on a lot of factors in the market. It's very, very dynamic. So it has to be observed over a period of time to be able to make a statement, to be able to make a perspective, to be able to make a view on top of that. है ना, कोई आएगा, समझो स्टॉक मार्केट क्रैश होता है या ऐसे कुछ ब्लैक स्वैन इवेंट्स होते हैं, लाइक वन इन अ वाइल, बट दे विल बेसिकली डोमिनेट द इंडस्ट्री. है ना, जैसे you see a black swan event. There was a .com bubble in 2000 जिसमें क्रैश हो गया पूरा सब कुछ, इकोनॉमी क्रैश हो गया, स्टॉक मार्केट following it and all the other and rates and everything. Similarly, there is a war situation right now, right? तो उसमें भी there are things changing. ठीक है, तो what will happen? We will see the same results for a particular period of time, and then one event will change everything, and then your average will suddenly change.